it is impossible. It is impossible. लिखो तब तक. It is impossible to determine simultaneously the exact position and momentum, exact momentum or velocity of a moving microscopic particles with accurate microscopic particles with accurate or without any uncertainty. That means to determine the simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of a moving microscopic particles with accurate oblique without any uncertainty or errors. That means this principle is applicable to moving microscopic particles like electrons, protons and neutrons. Like electrons, protons and neutrons. Electrons, protons and neutrons. So that means the two, one is momentum, the other one is position. They cannot be determined simultaneously or exactly. So alternatively, this can be also represented if delta x represents the uncertainty in the measurement of position, while as delta p or delta v represents the uncertainty in the measuring position of a moving particle is always equal to or greater than h divided by 2 pi. H divided by 2 pi. That means if we will say the product of these two, that is uncertainty in measuring the position and uncertainty measuring the momentum is always equal or greater than that of this constant. This constant h divided by 4 pi is actually constant. That means the value of this delta x into delta p is either equal or greater than that of this h divided by 2 pi. समझ आ रहा है? Or we can also write this in the next form, since this part is completely constant. That means delta x, we can also remove this constant within the proportionality. That means delta x is inversely proportional to delta p. Where delta x, ये लिखो delta x is, delta x क्या है? Uncertainty in measuring the position of position of a moving particle. Delta x is uncertainty in measuring the position of moving particle. While as delta p, delta p क्या है? Delta p is
delta P is uncertainty in measuring the uncertainty in measuring the क्या है ये delta P momentum or velocity of a moving particles. अब आपको क्या समझ आ रहा है इससे? बोलो, इससे क्या लग रहा है आपको? Those particles which are microscopic in nature, it is impossible to calculate their velocity or momentum and their position means location accurately. Why? Because they are microscopic. It's not possible to determine the two accurately or with certainty. That means if we will try to determine the position, let us take this one. If we will try to determine the position of a moving particle, then the uncertainty in this one, that is this, that will become greater, or that will become impossible. In other words, delta x, since it represents what? Uncertainty in the measurement of position. If the value of this delta x increases, what does it mean? The uncertainty. That means we cannot determine the position of x. समझ आ रहा है? और in other words, the certainty in the measurement of this delta P will increase. But we cannot simultaneously, we cannot determine both simultaneously. If we will try to determine this one, this will become what? Uncertain to determine. समझ आ रहा है? Let's take a case by case. Case 1. First, if delta x is small, what does it mean? Let delta x be small. हाँ, इसका मतलब क्या है फिर? Small means small uncertainty. That means there is a chance we can determine the position. समझ आ रहा है? तो मतलब क्या होते हैं? ये मिशन है को इस तरह साधक करित. आ रहा है समझ? Yes sir. But what will happen to the delta P at that time? If it is delta x is small, that means we can determine this delta x. But what will happen to delta P? Delta P will become certain or uncertain. क्या होगा? Delta P represents the uncertainty. That means the uncertainty of this delta P will increase. If this one goes down, delta x decrease, or its value is very small, that means delta x can be calculated. That means we can calculate what? Delta x. समझ आ रहा है? But what will happen to, on the other hand, what will happen to this delta P? Its value will increase. Means there is an increase in the uncertainty. We cannot determine delta P. We cannot determine delta P. That means we cannot calculate it. Not calculated at that time. कब? जब डेल्टा x क्या होगा? स्मॉल. दैट मींस इसका जो अब अनसर्टेनिटी होगी वो डिक्रीज होगी, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन दूसरा जो है डेल्टा P उस टाइम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. उसकी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है. समझा रहा है? नाउ सेकंड. अब हम डेल्टा P को स्मॉल कर देंगे. इफ डेल्टा डेल्टा P इज स्मॉल, व्हाट विल हैपन? If delta P is small, what does that mean? There is decrease in the uncertainty, but increase in the certainty. Certainty of determination of delta P, that is momentum or velocity. But what will happen to this delta x on the other hand? If this becomes small, delta x will increase. Yes, delta x will increase. That means we cannot determine this delta x accurately. Yes, sir. We can determine only one, that is delta P at that time. समझ आ रहा है? Yes, sir. So we can calculate at this time. We can calculate this, but not calculate. Second case. Now third case. If we have, say delta x is
जीरो। अब बता इस टाइम क्या होगा? डेल्टा एक्स मीन्स if delta x is zero, what does it mean? Uncertainty. Uncertainty क्या हो रही है? Zero हो रही है। What does it mean? We can locate the position of a particle. समझ आ रहा है? So at that time we can easily calculate this. We can easily calculate this one. But what will happen to the question is what will happen to this delta p? It is uncertainty will increase or decrease? Decrease. Increase. It will become infinite. Why? Because this delta x tends to zero. This will tend to become क्या? Maximum. समझ आ रहा है? So we can determine delta x, but we cannot determine delta p at that time. Not possible. या vice versa. यहाँ पर अगर ये वाला केस हमने लिया, these are the cases of commuting. Hisenbergs principle. Under which conditions this is applicable? This is applicable when you have this one. First case, delta x is small. That means uncertainty decreases. Certainty of calculation of delta x increase. Yes. But on the other hand, this we cannot calculate. Second case, in delta p, what will happen to delta p? In delta p, uncertainty in this decreases. That means we can calculate which one? Delta p or velocity. What will happen to delta x? That will not be calculated at that time. Certainty will increase. Because they are inversely proportional to each other. Delta x is inversely proportional to delta p. If the accuracy of this increases, we will come to look. If the accuracy of delta x increases, what will happen to this accuracy of delta p? That will decrease. ठीक है? Accuracy will decrease. यहाँ पर अगर increase हो जाएगी. So that means at a time we can calculate only one. We cannot calculate both. समझ आ रहा है? Particles like electron या कांच neutron, proton. We can determine only one at a time. समझ आ रहा है? Now the significance of this principle. यहाँ तक आप लिखो पहले cases. Now significance क्या है इस principle की? Significance actually हाँ impact इसका क्या रहा? Impact of this Hisenbergs principle. First, then we will count the significance. Impact and significance of Hisenbergs principle. This was proposed by Werner Hisenberg in 1927. 1927 after his name, nowadays known as Werner Hisenbergs principle of uncertainty, or simply Hisenbergs principle of uncertainty. अब इसका impact क्या है? Because of this nature, the dual nature explained by the de Broglie and this Hisenberg, the particle nature or the Bohr's model failed. Bohr's model failed completely. Why? क्योंकि बोर का एक कंसेप्ट था कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ तो उसका मतलब क्या है? दैट मींस द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज फिक्स है ना? तो बट बिकॉज ऑफ दिस अब इसका क्या है? ये कंसीडर कर रहा है कि पोजीशन भी फिक्स नहीं हो सकती जब तक क्या होगा? डेल्टा पी क्या होगा? डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इसमें क्या होगी? ज्यादा, तभी पोजीशन क्या होगी? फिक्स। दैट इज व्हाई कि जो बोर का मॉडल था उसको इसने क्या किया? चैलेंज किया। अल्टीमेटली दैट फेल्ड। बोर्स मॉडल फेल्ड कंप्लीटली बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? हिसेनबर्ग एंड डी ब्रोगलीज एप्लीकेशन। अब इसकी सिग्निफिकेंस यहां तक आपने लिखा है। सिग्निफिकेंस क्या है अब इसकी? सी it's having one important significance, but in daily life it is not having any significance. इसमें क्या है? significance एक है। significance इसकी क्या है? of visibility of the objects. जब भी कोई light visibility of an object, when light strikes are illuminated by their object. अब क्या होता है? इसके पीछे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं
लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, उनको हमें अगर देखना है तो वी कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप, विदाउट नो डाउट। अगर जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको जब भी वो कैसे विजिबल हो जाते हैं हमें, whenever there is a light falling on an object, तो लाइट उसको क्या होता है, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू, लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक, तो उसके वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू विजिबल, है ना? यस सर। बट अब जब स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल Particles. उनमें क्या होगा, लाइट उनसे हो जाएगी रिफ्लेक्ट, नो सर। तो उनको विजिबल कैसे हम देख सकते हैं, Microscope. ये हम माइक्रोस्कोप यूज करते Yes, हैं। sir. बड़े कल मैंने बताई थी एक एप्लीकेशन इसकी कि अगर हमारा रूम में जो डार्क रूम है उसमें क्या होगा, एक सुराख, वहां से लाइट आ जाएगी, अंदर अंदर हमें दिखते हैं क्या, छोटे छोटे पार्टिकल्स, हालांकि बाहर हमें नहीं दिख रहे हैं वो, लेकिन अंदर दिख रहे हैं, है? यस सर। बाहर हमें नहीं दिख रहे हैं वो, वही पार्टिकल्स बाहर भी है लेकिन अंदर भी वही है, अंदर दिख रहे हैं लेकिन बाहर नहीं दिख रहे हैं। यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। तो ये वजह है कि जब भी कोई स्मॉल पार्टिकल होगा लाइक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो उसका जो नेचर है, अगर इस पर लाइट पड़ जाएगी, से लाइट फॉल्स ऑन टू दिस, व्हाट विल हैपन, जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज व्हाई या इल्यूमिनेशन जिसको कहते हैं, तो उसकी वजह से जो पार्टिकल है दैट विल बिकम विजिबल, दैट विल बिकम विजिबल टू अस बिकॉज ऑफ what, because of light, because of light. Same is the case with these atomic particles or subatomic particles. Whenever the light falls on, if light falls on these particles, they will become visible, they will become visible. But होता क्या है, ये whenever the light falls on these small microscopic particles, moving microscopic particles, they will change their what, position and movement when the light falls on them. आपने देखा होगा कि उनमें वाइब्रेशन ज्यादा होती है, जब साथ होते डार्क रूम में चूषा, सुने? उसमें क्या होता है कि वो पार्टिकल चासा और ही और नचा, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, अगर तेज लाइट आए तिमन आए ज्यादा मूवमेंट, मासन ज्यादा मूवमेंट कर, वो अगर कम आसे तेज चासा तिमन क्या कम मूवमेंट, है? बट दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ और एनर्जी या फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि ये मिस एनर्जी आसे लाइट ज्यादा तीता तिमन मुझ मोमेंटम क्या ज्यादा, द पोजीशन तम सा डिस्टर्ब, पोजीशन हेको न कड़ित, but at that time that depends on the light कि light मुझ कौन wavelength, light मुझ कौन wavelength, if wavelength is longer, frequency कम होगी या एनर्जी कम होगी, पोजीशन की चांसेस है कि पोजीशन निकल जाएगी, समझ आ रहा है? बट अगर वेवलेंथ वो शॉर्टर है तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उस टाइम मोमेंटम ज्यादा होगा, position cannot be calculated, position cannot be calculated. So that is why this principle is only applicable for common microscopic particle like proton, electron and neutron. We cannot use this for the objects which are larger, larger like ball, etc. Because this is only applicable for what? Microscopic particles. समझ आ रहा है? That's why it is having the significance for the visibility of the small microscopic particles. Visibility of small microscopic particles वहाँ पर इसकी application है. Day to day life में इसकी application नहीं है, क्योंकि day to day life they are macro particles, they are macro particles या macroscopic जिनको कहा जाता है, या semi macroscopic particles, उनके लिए इसकी application नहीं है. इसकी खाली application कहाँ पर है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक में नहीं है. दैट इज हिसेनबर्ग्स प्रिंसिपल.